Okay, good day students. Today we are going to continue with lecture number 6 of our course of Total Quality Management. Now in the previous lecture we were discussing about the different techniques of the TQM in which finance and accounting were also involved. So we are going to continue from there today and we are going to be moving on with that. Now when we speak about accounting, so we depend on engineering to use general customer requirements in developing technical specifications, identifying specific parts and materials needed, and identifying equipment that should be used. So the main thing is when we consider the customer requirements, at that point when an organization is performing their services or manufacturing, let's say, a product, they have to be very particular about their customer needs. So according to the customer requirements, if they develop different technical specifications, खास तो उसमें changes लेके आए हो, ठीक है, जो technical तरीके से उन्होंने उसमें changes करनी है manufacturing के लिए ताकि वो customer requirement के मुताबिक उनका product हो, like identifying specific parts, कोई parts या material जो है जो ज़रूरत है उसको identify करना, फिर equipment जो उसमें use होना चाहिए वो उसको identify करना. So that's all in the matter of engineering, like general आपने देखना होता है कि customer की requirement जो है manufacturing में अब specific when the marketing department does a survey, then they get an idea of what the customer requirement is, and then they move that on to the departments where they're manufacturing the things. Now at that point, then according to that, then they make changes in it for maintaining the quality and satisfying the customer's needs. Now the other section after accounting would be purchasing. Purchasing is another important part of TQM process. TQM Total Quality Management में purchasing एक major role play करता है, ठीक है, whereas marketing is busy identifying what the customers want, and engineering is busy translating that information into technical specifications. Purchasing is responsible for acquiring the materials needed to make the product. तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग में अगर उनको टेक्निकल तरीके से इंजीनियरिंग की साइड पे अगर वो देखें तो जहाँ पे वो इंजीनियर कर रहे हैं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस चेंज करनी है. मार्केटिंग वाले उनको ये है कि उन्होंने कस्टमर की नीड्स और वांट्स देख के आइडेंटिफाई करना है, एंड परचेसिंग में फिर वो मटेरियल्स जो प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है, इसलिए परचेसिंग ऑल्सो भी एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है. सो दे हैव टू लुक एट दैट ऑल्सो. नाउ परचेसिंग मस्ट लोकेट सोर्सेज ऑफ सप्लाई, ensure that the parts and materials needed are of sufficiently high quality, and negotiate a purchase price that meets the company's budget as identified by finance. So अब finance वालों ने आपको एक budget allot कर दिया कि ये budget है, within that budget you have to work and you have to acquire the materials. Now the work that the purchasing department does, the purchasing department has to maintain, if they buy low quality products, then automatically the result of after the manufacturing of the product will be very low. So the responsibility then highly rests on the purchasing department also to buy the specific parts or materials of high quality. So if they buy high quality stuff, then obviously the end result would be of finished and high quality. And फिर उनको ये negotiate भी करना होता है, जो finance department ने उनको एक budget allot कर दिया है, उस हिसाब से उनको payment अपना जो है वो देख के then they have to buy it. लेकिन खरीदना फिर भी उन्होंने high quality stuff है within the budget. So remaining within the budget, they need to buy something that is of high quality, the materials or parts, so that when the end product does come out, then that is of satisfaction. And उधर से उनके end से quality वहाँ से control होती है कि वो purchasing में अपनी quality control करते हैं. So like I said, every department in an organization has to maintain the rules of quality.
Next आ जाता है human resources. Now when we speak about human resources is critical to the effort to hire employees with the skills necessary to work in the TQM environment. So total quality management की environment एक create हो जाती है एक organization में. अब human resources का department है, उनका क्या मकसद है या उनका क्रिटिकल एफर्ट क्या है कि उन्होंने ऐसे लोग या ऐसे एम्प्लॉइज़ हायर करने हैं जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के एनवायरनमेंट में चल सकें, ठीक है, जो उनको मेंटेन रख सके उन रूल्स को, एंड दैट दे कैन इजीली वर्क इन दैट एनवायरनमेंट. नाउ दैट एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो व्हाट इज एन एनवायरनमेंट, हाउ वुड वी डिस्क्राइब दैट? सो द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स अ हाई डिग्री ऑफ टीम वर्क. एनवायरनमेंट में आपकी टीम वर्क आ जाती है कि एवरीबडी नीड्स टू बी वर्किंग टुगेदर एज अ होल और एज वन. Cooperation within the departments is very important, like from the marketing department to the manufacturing department to the engineering department and further on to the purchasing. So all of these departments have to cooperate with each other. Then dedication. Now dedication to their work. That's very important also, because if a worker or employee is dedicated towards his job or particular work, then he would be performing it in a better way. And customer commitment. And then according to that, if they, let's say, for example, let's speak about a car company or automobile company who's manufacturing cars. Now, for example, a customer has, according to his needs, ordered a car to be customer specified, and special alternatives or things added or features added into it. So they have committed to the customer that they're going to be providing him the finished car at such and such date. So to fulfill that customer commitment, they need to have everything ready and of that high quality. Now, human resources is also faced with challenges relating to reward and incentive systems. So they're also, like, day by day they have to go through with the challenges that when they have to see that if anybody employee is working hard enough, or if they are giving their best, then they should be rewarded or they should get some incentives for it. Now, creating rewards and incentives within a department or organization helps improve employee quality, because once a person has an idea that they're going to gain some incentive if they work better, then obviously they would be performing a little better. Now, rewards and incentives are different in TQM from those found in traditional environments that focus on rewarding individuals rather than teams. Now, sometimes in total quality management, when a employee is working on his own, then he would get maybe a raise in his salary or a reward or an incentive, something that would motivate him to work on his own and perform better. But in total quality management, mostly because it's the environment is mainly focusing on high degree of teamwork. So when they speak about teamwork, then obviously teamwork, they expect to give incentives or rewards to the team also for working together and performing well as a team. So it's not all about just a person performing on his own or alone, or how well he is performing in an organization, but how they are working well as a team. Because teamwork means cooperation with each other, and it also means that they have to be dedicated to their work and they need to get along well. So, and once a team is working well, then they produce better results. So in TQM, it's a little different from maybe a traditional environment where they would be giving an individual some sort of incentive or reward. So in TQM, it would be more focusing on rewards or incentives of the team, of the whole team, and how they would be gaining from it. Next, if we speak about information systems. Now, information systems, IS, is highly important in TQM also. Now, it's important in TQM because of the increased need for information accessible to teams throughout the organization. So, information system, IS, आपके लिए क्यों important है TQM में? इसलिए कि it will help you spread
the news or information throughout the team. यानी पूरे organization में ठीक है accessible to teams होगा कि उनको they will have all the information regarding their work related issues or their projects. So IS should work closely with the company's TQM development program in order to understand exactly the type of information best system best suited for the firm. So IS आपका जो department है information systems का, they have to work closely. अब उन्हें ज़्यादा TQM development जो program है उन लोगों के साथ उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है. और उसकी reason क्या है? उसकी reason ये है कि जब तक वो उस चीज़ को understand नहीं करेंगे कि exactly उनको किस type का information जो है वो system ऐसा best create कर सके जो उस firm की environment को suit करे. That means that everybody should have access to the vital information that they need, and they have to go according to the rules of that. Now, including the form of the data, the summary statistics available, and the frequency of updating. So, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. एक तो firm का data जो है, ठीक है, वो, then summary statistics जो available हैं, उसकी importance and frequency of updating. All of these things have to be looked at by the IS or information systems, and they have to work together with the TQM development programs ताकि they can perform well and they can provide information to the teams or the employees in a proper way. Now, inside OM, now when we speak about that, we would say implementing total quality management requires broad and sweeping changes throughout a company. So, अगर हम ये देखें कि total quality management हमने implement करना है किसी organization या किसी company में, so it requires a huge sweeping changes throughout the company. company के throughout हर system में उसके change आएगा. It also affects all other decisions within operations management. So, उसके अलावा वो जो है, it affects the decisions that the operation management would be making. Now, the decision to implement total quality management concepts throughout the company is strategic in nature. So, अगर हम ये देखें कि ये डिसीजन जो है कि हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में, सो दैट वुड बी वेरी स्ट्रेटेजिक इन नेचर जो है एक कंपनी के अंदर. नाउ इट सेट्स द डायरेक्शन फॉर द फर्म एंड द लेवल ऑफ कमिटमेंट. तो ना सिर्फ ये जो है आपको यानी स्ट्रेटेजिकली आपको उसकी नेचर से यानी थ्रू आउट डिसीजन करना इम्प्लीमेंट करने के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स जो हैं सब में इम्प्लीमेंट करना. दैट मीन्स लाइक इम्प्लीमेंटिंग इट इन एवरी ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. नाउ when we speak of that, it sets the directions, let's say, for the firm and the level of commitment. And उनके level of commitment आ जाती है कि to what level are the employees committed to perform at that level that they would maintain the total quality management procedures or the concepts of it. Now, for example, some companies may choose to directly compete on quality, whereas others may just want to be as good as the competition. So, कई कंपनीज में अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंट आइडियाज होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ना. इम्प्लीमेंट अगर हम कॉन्सेप्ट्स उसके करना चाहे तो कोई कंपनी होगी वो चाह रहे होंगे कि उनकी क्वालिटी दूसरी कॉम्पिटिटर की कंपनी से बेहतर क्वालिटी हो, यानी वो उससे एक्सीड करें. दे शुड एक्सीड इन द क्वालिटी दैट दे आर गिविंग एंड इट शुड बी बेटर देन द अदर पीपल इन द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. But some companies would even think that just being as good as the competition would be enough also. यानी अगर आप उससे बेहतर नहीं हो सकते तो एटलीस्ट उनके लेवल का आप क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स आपके यानी इंसर्टेड हो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में और उनके ऊपर फॉलो किया जाए और आपकी यानी क्वालिटी जो है वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ आपके एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए. Now, it is operations strategy that then dictates how all other areas of operation management will support this commitment. अब उसके बाद क्या चीज़ होती है कि operation strategy ये चीज़ है कि that dictates how other areas of operation management will support. यानी वो फिर ये देखते हैं operation strategy का काम क्या होता है कि वो ये dictate करते हैं कि फिर operation management जो है वो दूसरी areas को कैसे सपोर्ट करेगा और उनकी क्या क्या कमिटमेंट है अकॉर्डिंग टू द वे और द सर्विसेज दैट दे विल प्रोवाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट TQM affects areas such as product design,
which needs to incorporate customer defined quality. So सबसे पहली चीज जो है जो implement कर रहा है TQM का जो affect करता है वो सबसे पहले product design को affect करता है. Now, when if the design of the product is flawless, then obviously your end result will be flawless. So the decision to implement it would affect the product design heavily. और उसमें ज़रूरत है, it needs to incorporate customer defined quality, और customer defined quality उसमें डालना या उसमें add करना वो बहुत important है. Now, processes are then redesigned in order to produce products with higher quality standards. फिर processes में उनको हम अगर customer defined quality के तहत नहीं आ रहा तो फिर हम उनको redesign किया जाता है, and then in order to produce the products ताकि वो products ऐसे produce हो सके जो higher quality standards को meet कर सके. So all of your products should be of a certain level of high quality. और job design is affected also. So इसमें job design भी affect होती है. Now, as workers need to be trained in quality tools and become responsible for rooting out quality problems. So job design इसलिए affect होती है कि जो जितने भी employees हैं, workers हैं, उनको proper training of quality जो है वो देना बहुत ज़रूरी है, और they need to be trained in using the quality tools. Okay, if they can use the quality tools with success, then they can see where if they are finding any defects, or they could implement better strategies. So, and they become responsible for rooting out quality problems. और quality problems जो है जब वो quality tools use करना उनको आएंगे तो उनको quality problems define करना या point out करना या निकालना वो ज़्यादा आसान होगा. So proper training is very important also. So also supply chain management. अब supply chain management भी affect होती है इससे. Now, supply chain management as our commitment to quality translates into partnering with suppliers. So suppliers के साथ partner करके जो है आप काम करना है, तो it means like supply chain management वो चीज़ इसलिए affect होती है कि आपकी commitment है, ठीक है, you are transferring your quality and to the suppliers also, and you want to have them also maintain their according to the quality rules further on when they are selling the product into the market. So as you can see, virtually every aspect of the operation functions must change to support the commitment towards total quality management. So एक चीज़ तो understood हो गई है कि operations के हर लिहाज से function जो है they have to change. They have to change ताकि वो quality, total quality management को की commitment को fully support कर सकें. That means that they can implement all the rules or the concepts of total quality management in their product, in their operations, in their product design, सारे functions में total quality management का जो commitment है उसको support करना चाहिए. Now, when we talk about in this chapter, we would talk about chapter highlights. Now, number one would be total quality management. TQM is different from old concept of quality because its focus is on serving the customers, identifying the causes of quality problems, and building quality into the production process. So ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि quality, total quality management क्या चीज़ है, पुराने कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है. ट्रेडिशनल जो ओल्ड कॉन्सेप्ट चल रहा था क्वालिटी का, उससे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अब ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे कर रहा है, कस्टमर्स को सर्व करने के ऊपर, ठीक है. फिर उनके आइडेंटिफाई करना, उनके प्रॉब्लम्स जो है क्वालिटी प्रॉब्लम्स इन अ प्रोडक्ट और इन देयर सर्विसेज, और फिर वो बिल्डिंग क्वालिटी इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस, और प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही क्वालिटी के स्टेप्स ऐसे बिल्ड कर दिए जाए कि आपका एंड रिजल्ट या एंड प्रोडक्ट जो है व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द प्रोडक्शन फेज वो बिल्कुल फ्लॉलेस हो, बिल्कुल उसमें कोई फॉल्ट ना हो. Now, number two would be there are 4 categories of quality costs. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि हमारे 4 क्वालिटीज कैटेगरीज हैं क्वालिटी कॉस्ट के बारे में. Now, the first 2 are prevention and appraisal costs which are incurred by a company in attempting to improve quality. So पहले 2 क्या है, prevention है और appraisal है.
ये एक कंपनी एक्वायर करती है टू अटेम्प्ट टू इम्प्रूव क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए. नाउ द लास्ट टू कॉस्ट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, व्हिच आर द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी फेलियर्स दैट द कंपनी विशेस टू प्रिवेंट. So we've discussed this further on also. So when a company wants to provide complete quality in a product, they need to consider the internal and external failure costs also. So maybe if a product fails in their quality checks, then they need to start improving or implementing different rules of total quality management so that their internal or external costs could be reduced. Number 3 was that the 7 most suitable individuals who shaped today's concept of quality are Walter A. Shewhart, E. Edwards Deming, and Joseph M. Juran. So we've studied about all of these people individually. So this is just a reminder or repeating of it so that you can come up to date with it. Then Armand V. Feigenbaum, also Philip B. Crosby, Kaoru Shiokawa, and Kadichi Taguchi. These were the major people or the gurus, we can say, that have shaped today's concept of quality. तो आज जो आजकल organizations जिन quality rules पे चल रहे हैं या जिन concepts को लेके चल रहे हैं total quality management के, वो इन लोगों ने बहुत पहले identify कर दिए थे. And after they've identified them and they've said that these are the rules, or they've set the standards of these rules, then up till now, up till today, all the companies or organizations are following these same patterns and rules. जिसमें graphs भी आ गए हैं, check करने के लिए tools आ गए हैं. ठीक है, they've given you different aspects and concepts of maintaining total quality management in an organization. Number 4. Now, when we speak about the 7 features of TQM, and they're combined to create the TQM philosophy. So, हमने 7 features भी discuss किए TQM के, ठीक है, which create to combine उसकी philosophy create करने के लिए total quality management की. Number 1 was customer focus, ठीक है, customers के ऊपर ज़्यादा focus हो, उनकी needs, उनकी जो quality identify वो करें या उनकी whatever they want. Then continuous improvement in your manufacturing, in your processing, on your delivery and supply chain, every single thing. And then employee empowerment, where the employees are given the rights or they're given proper training from which they can then use the quality tools properly and identify defects if any. So then use of quality tools, that's one major also in employee empowerment, because if they learn how to use the quality tools and have the power to do so, then the process of identifying mistakes would be much more simpler. And product design. Now, if the product design has to be flawless, instead of making changes in the product design, then they need to improve the quality in the start of the design. Then process management is another, and managing supplier quality. So all of these things would be the 7 major features of the TQM philosophy. Now, when we speak about quality function deployment, quality function 5th was, we've already studied that. Quality function deployment is a tool used to translate customer needs into specific engineering requirements. So engineering requirements पे उनको translate करना, उनको understand करना. That means like from a customer would be giving you his comments or his work in daily life language or an everyday language, but translating them into the specific needs, engineering requirements. That would be translating those needs. Let's say if a customer has said, like I've explained to you before in previous lectures, that if a customer, let's say, specifically says that he needs something that is durable. So what does the customer exactly mean by durable? That means that it should be long lasting, or that it the strength of the material or the quality of the product that's used, it should be of high standards. Or let's say if the customer says they need something that is more roomy in a bag, let's say,
So translating those engineering requirements or words into technical words is also the function of the Quality Deployment Center. Now they would translate those needs and say, okay, more pockets, that means more different sections in a bag. Now, 7 problem-solving tools are used in managing quality. So we've already spoken about the 7 major tools that we use in checking the quality of a product or anything, and that employees can also, they need to be trained to use those. Now, out of those 7, now often called the 7 tools of quality control, the first would be the cause and effect diagram. So the first, we've already gone through that basic, that the cause and effect diagrams would explain in diagram-wise, step-wise. Then the flow charts, then checklists, then scatter diagrams, then Pareto analysis, control charts, and histograms. So these would be the 7 tools of quality that an organization would be using to check their quality efficiency. Number 6 now. Number 6 would be reliability is the probability that the product will function as expected. Now, the reliability of a product is computed as the product of reliabilities of the individual components. So, reliability would be major, how would we be judging that? Would be, okay, product function किस तरह कर रहा है. हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक प्रोडक्ट की हमने लेट्स से कि हमारी लाइफ उसका हमने एक सेट की है कि इस प्रोडक्ट की ये लाइफ होगी या until then it should function properly. Now that is our expectations that the life of that product should last up to that certain or specific period. So reliability would be it's the probability कि ये प्रोडक्ट वाकई ही एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगा, वाकई उन एक्सपेक्टेशंस तक लास्ट करेगा. विल इट मेंटेन द क्वालिटी एंड मेंटेन लेट्स से इट्स standard until that point where it's expected to. Now the reliability of a product is computed as the product of the reliabilities of the individual components. So reliability of product हम किस चीज़ को गिनेंगे? Not as a whole. हम पूरे let's say if we have taken a machine, so we wouldn't say the whole finished machine would be the reliability of a product, but the reliability of a product, how would we be judging it? We would be judging it as individual components. So the different components in that machine would consist of if it is going to maintain its lifetime or expectancy or whatever time that they have stated, that the company has stated that this is the life of this product. Let's say, for example, now, even if you take an example of a computer. So the different parts, now a computer is assembled with different little parts. Now every single part has its own lifetime. It has its own expiry date or its own validity, that it's going to work till this certain time period or this certain time frame. Now the individual reliability of those individual components put together and working and functioning as one. So one product has an idea that this is going to last till this long, so the other one has to be the same also. And when they are all put together, those components, then as a whole that machine would be, or let's say a computer would be, working to a specific time before it starts finding faults or defects in it. So उस वक्त तक वो उसका यानी एक चीज़ जो फंक्शन है एक प्रोडक्ट का, जहाँ तक वो एक्सपेक्टेड है वहाँ तक उसकी परफॉर्मेंस होना, ये रिलायबिलिटी जो है उसमें आ जाता है, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट. नंबर 7, अब 7 हमने डिस्कस किया था कि मैल्कम ब्रिज अवार्ड्स थे, ठीक है, एंड in these previous chapters, in these lectures up till now, what we've discussed, this is just an overview of all of that. So going over it once again, the Malcolm Baldrige Award is given to companies to recognize excellence in quality management. So quality management में excellence को judge करने के लिए ये award दिया जाता है. We've studied it in detail. Companies are evaluated in 7 areas. Companies को 7 areas में evaluate किया जाता है, including quality leadership and
performance results. So उनको quality leadership and performance results की base के ऊपर judge किया जाता है. Now these criteria have become a standard for many companies that seek to improve quality. So ये criteria जो है 7 main criteria ठीक है awards की, ये एक कंपनी को जज करने के लिए या एक कंपनी की क्वालिटी परफॉर्मेंस या इम्प्रूवमेंट चेक करने के लिए इट्स मोर देन इनफ दैट द स्टैंडर्ड इफ अ कंपनी इज फॉलोइंग दीज स्टैंडर्ड्स देन दैट मीन्स दैट इट कैन बी जज्ड ऑन प्रॉपर क्वालिटी. So this criteria has become a standard for many companies that seek to improve quality. जो अपनी quality improve करना चाह रहे हैं वो इन्हीं standards की base के ऊपर लेके अपनी company में changes या improvements लेके आते हैं. So ISO 9000 is a certification based on a set of quality standards established by International Organization for Standardization. So ये International Organization for Standardization ने एक certificate किया ISO 9000 के नाम से start किया, ठीक है, जो quality standards की base पे है. And those companies that fulfill the criteria of the quality or the high quality standards in their organization are then they can get certified by the ISO, and once they get certified there they have to go through a vigorous process of getting checked, and the ISO team judging and evaluating their standards also of quality, and then if they do fulfill those standards then they are given a certification of ISO. So that would certify that they are maintaining those quality standards in their organization. Now its goal is to ensure that quality is built into production processes. So ISO का main goal क्या है? Not कि finished product के ऊपर जो है quality check हो या quality ensure की जाए, but during production process के दौरान इसके अंदर quality built होनी चाहिए. So different processes and different systems have to be worked into the production process at that time, for which we use those 7 tools of quality to check and maintain that during the production process that we are maintaining quality at different stages. Now an ISO 9000 focuses mainly on quality of conformance. So ज़्यादा ये किस चीज़ पे focus कर रही है? Quality of conformance पे. Now when we speak about further on, we move on to learning and speaking about the basics. Now when we're speaking about the basics of total quality management, we would start with maybe a saying that quality is about passion and pride. So quality is not about just maintaining certain rules, but it's about the passion and pride of having quality. So Tom Peters and Nancy Austin, a passion for excellence, they quoted this, that quality is about passion and pride. Now in basics, when we look at the basics of total quality management, quality is at the top of most agendas, and improving quality is probably the most important task facing any institution. So quality जो है वो most top agendas में इसलिए आता है क्योंकि improve quality करना किसी भी product या service पे is the first thing that an organization wants to go with. Now probably the most important task किसी भी institution में, ठीक है, वो quality को improve करना है. Now however, despite its importance, many people find quality an enigmatic concept also. So important to hai, but other people find it enigmatic also. It is perplexing to define and often difficult to measure. So quality को define करना बहुत complicated है, perplexing है, बहुत complicated है इस sense में कि to exactly pinpoint what quality is very difficult. Like I've explained before that defining quality according to maybe customer needs would be different, according to the customer defined standards would be different, their wants would be different, then according to a company, how a company is working or manufacturing, let's say, a product. So it's pinpointing exact details that yes, we are producing something with quality would be very difficult to define and often difficult to measure.
So sometimes that's why we've created these tools in which we could maybe have a rough sketch of measuring the quality. So one person's idea of quality often conflicts with another. So no two people think alike. In the world, you know, everybody has a different way of perceiving things, and when they perceive things in a different way, then they perceive quality in a different way also. So sometimes उनके ideas जो है conflict करते हैं एक दूसरे के साथ, and as we are all too aware, no two experts ever come to the same conclusion when discussing what makes an excellent school, college or यूनिवर्सिटी. अब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो कोई दो एक्सपर्ट्स भी अगर आप उठा लें फील्ड में से, तो उन दो एक्सपर्ट का भी सेम कंक्लूजन नहीं होगा जिस पे वो अग्री कर सकें कि यस, एक क्वालिटी स्कूल या क्वालिटी कॉलेज या क्वालिटी यूनिवर्सिटी इस बेस पे बनती है, या यूनिवर्सिटी में क्वालिटी इस बेस पे मेंटेन होती है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज टू पिन पॉइंट इट और डिफाइन इट because of this reason that there are different concepts, and experts have different ideas and concepts according to their own mindset also. So when we speak about the message of quality, now we all know quality when we experience it. So मेन चीज़ हम उसको डिस्क्राइब या डिफाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट हमें क्वालिटी का कैसे पता चलता है, हमें अपनी एक्सपीरियंस से पता लगता है, व्हेन वी आर एक्सपीरियंसिंग इट. सो बट डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग it is a more difficult task. So in our everyday life, we usually take quality for granted, especially when it is regularly provided. So अगर रेगुलरली हमें क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, सो देन एवरीडे लाइफ में उसको जज करना या उसको असेस करना कि हमें प्रोडक्ट्स जो है वो क्वालिटी में मिल रही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी हार्ड. एंड स्पेशली जब अगर हमें लेट्स से कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में है, या वी आर गेटिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स और वी आर गेटिंग क्वालिटी सर्विसेज फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन और दैट प्लेस, देन स्पेशली जब हमें रेगुलरली एक रेगुलर बेस पे क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है, सो एवरी डे इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इट, एंड फिर हम उस क्वालिटी को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं. We think it has to be like that. We stop appreciating all the steps that an organization or a institution has taken for maintaining those quality steps. Now, yet we are all too acutely aware when it is lacking. So, जब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल होंगे या क्वालिटी हमें किसी सर्विस या उसमें स्टैंडर्ड मिलेगी, तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं बिकॉज वी डोंट अप्रिशिएट इट सो मच. बट अगर वो कहीं से लैक कर रही है या कम है क्वालिटी, वी विल इमीडिएटली रियलाइज एंड जज के वी आर नॉट गेटिंग द क्वालिटी दैट वी रिक्वायर. Now, we often only recognize the importance of quality when we experience the frustration and time wasting associated with its absence. So, quality को हम कब जो है ना importance देते हैं या recognize करते हैं, जब हम उस phase में से गुजरते हैं. अगर हमें daily basis पे हर चीज़ में quality maintain हमें मिल रही हो, तो हमारी वो frustration और वो शायद मे बी थॉट्स इस तरह यानी हमें डिफ़िकल्ट ना हो रिकग्नाइज करने में. बट जब अगर हम टाइम वेस्टिंग हो रही है हमारी, ठीक है, हमारे किसी काम में, या फ्रस्ट्रेशन है ऑफ द एक्सपीरियंस, जब जहाँ पे किसी भी चीज़ में जो एसोसिएटेड होती है कि उसकी एब्सेंस है, क्वालिटी की एब्सेंस है, and there isn't any quality in the services that we are getting, then we would get frustrated. And उससे obviously time waste भी होता है. So one thing we can be certain, एक चीज़ के लिए तो हम श्योर हो सकते हैं कि क्वालिटी इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन थिंग्स बीइंग एक्सीलेंट और रन ऑफ द मिल. सो रन ऑफ द मिल वुड बी मोर लेट्स से कि बस गुजारा चलने वाला. सो एक चीज़ का तो हम सर्टन हो सकते हैं कि क्वालिटी इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन थिंग्स. ठीक है, सो किसी चीज़ का एक्सीलेंट होना या किसी चीज़ का एवरेज होना, वो डिफरेंस है क्वालिटी का. So if something is excellent, we can judge that yes, that certain thing or that service or that product is of quality because it is of excellent material or excellent good. But run of the mill, so the difference how we define something that is average and something excellent would be defined by quality.
Now, increasingly, quality makes the difference between success and failure. फिर not सिर्फ के जो है हमें excellence और एवरेज के बीच में फ़र्क पता चले क्वालिटी का, बट क्वालिटी ऑल्सो हमें ये डिफरेंस भी बताती है कि सक्सेस और फेलियर में. So the best organizations, whether public or private, understand quality and know its secret. So बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? जो चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, ठीक है, जो क्वालिटी को अंडरस्टैंड करते हैं एंड हु नो द सीक्रेट ऑफ क्वालिटी और मेंटेनिंग क्वालिटी इन देयर इंस्टीट्यूशन और देयर ऑर्गेनाइजेशन. सो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वही होंगी जो इस चीज़ को रिकग्नाइज कर सकें और इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर सकें या अपने एम्प्लॉइज़ या कंपनी से वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकें क्वालिटी की. तो चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, इफ दे आर मेंटेनिंग the quality standards and rules, then that means that they know the secret and they would be considered as the best organization. Now, seeking the source of quality is an important quest. So important, ज़्यादा main जो है ना सबसे, let's say the important quest would be कि हम quality का source seek करें, कि where and how could we define quality and how where are the faults and where we can maintain the quality in a product. Now, when we talk about education, let's say for example, education is also recognizing the need to pursue it and to deliver it to pupils and students. So अब educational organizations में भी ये चीज़ देखी जा रही है, ठीक है, कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं जिससे ट्रेनिंग एम्प्लॉइज़ को भी, यानी दे हैव टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दे हैव स्टूडेंट्स के लिए जो है वर्कशॉप्स हैं या प्रोग्राम्स हैं इस तरह. The reason why they're doing it because they realize कि अब हमें क्वालिटी को परस्यू करना है, हमें क्वालिटी मेंटेन रखनी है जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सोर्स ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन. सो अगर हम क्वालिटी का सोर्स ढूंढें एजुकेशन में तो उसके लिए वी हैव अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स एंड वी कैन सर्च फॉर दोज क्वालिटी सोर्सेज वेरी इजीली. नाउ अमंग दोज सोर्सेज जो एजुकेशन में अगर लेट्स से कि वी वांट टू मेंटेन क्वालिटी, एंड अमंग्स दोज वुड बी द आउटस्टैंडिंग टीचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर जज करें दिस नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हम क्वालिटी को एजुकेशन में मेजर करें तो आउटस्टैंडिंग टीचर्स वुड बी वन, हाई मोरल वैल्यूज वुड बी अनदर, excellent examination results that would be from the students, that they would study well. Obviously, if you have outstanding teachers and you have high moral values, then you would get excellent examination results also if the contents or material is of good quality that the students are receiving. The support of parents, business and the local community. So parents and business and local community की support. Plentiful resources. So they should have not a lack of resources but a lot of resources. The application of the latest technology, फिर latest technology की application. Strong and purposeful leadership, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या किसी भी एजुकेशनल फील्ड में उसमें स्ट्रॉन्ग एंड पर्पसफुल लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. द केयर एंड कंसर्न फॉर पीपल्स एंड स्टूडेंट्स, और फिर पीपल्स एंड स्टूडेंट्स की केयर एंड कंसर्न, दैट्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर. अ वेल बैलेंस्ड एंड चैलेंजिंग करिकुलम, और फिर एक वेल बैलेंस्ड और चैलेंजिंग करिकुलम जिसमें स्टूडेंट्स के ब्रेन को चैलेंज किया जा सके, या वेल बैलेंस्ड हो के उसमें हर चीज़ इंक्लूडेड हो. So when we're looking at quality, let's say in education, that these would be the major points that we would like to follow. Now, it is instructive to look at to the business world for an insight into quality. So sometimes when we want to maintain quality, we would say like we would look more towards the business-oriented organizations to see how they are maintaining quality. Now, IBM's definition puts it simply. IBM की definition एक उन्होंने बड़े simple तरीके से कहा है कि quality equals customer satisfaction. सो क्वालिटी का क्या उन्होंने कैसे उसको डिफाइन कर दिया कि क्वालिटी क्या चीज़ है? क्वालिटी जो है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, इट इक्वल्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन. इफ अ कस्टमर इज सेटिस्फाइड देन दैट मीन्स दैट योर service or your product or your organization is maintaining the quality rules. So Untitled Chapter in 1991 had said that. Now,
Alex Trotman, an executive vice president of the Ford Motor Company, has delivered the same message. He's delivered the same message, and he says that we know these days, in these tough times, that we have to satisfy our customers completely. So, Alex Trotman जो है, जो executive vice president है Ford Motor Company का, it's a huge car company in the US. Even he, in his production, realizes or judges that they realize that nowadays tough times. Why are there tough times? Because there is lots of competition in the market now. So according to the major factors and the major competition going on, then they have to maintain and they have to satisfy their customers completely. If their customers would be completely satisfied, then that means they are maintaining total quality and that they are competing with their competitors in a best way. If their customers would be unsatisfied, that means that they would lose business. Once losing business means losing business forever, because if a customer, let's say, is inclined to buy from a certain company or use the products of a certain company, then if they are not satisfied with the quality measures of that company or the quality that is provided to the customers, then automatically they would move to another company, and by doing that, then this company would be losing its business. So and they wouldn't ever want to come back, because they would have already had a bad experience with it and they wouldn't want to try it again. So once you lose a customer, then that's for lifetime. You lose them. You can never gain them back by maybe improving quality later on. So total quality management is all about improving the quality while working at the same time. So in these days, having quality concepts intervened with your work is very important. So it is not quite as simple as listen and respond to your customers, and all the other good things will follow, but it is a serious start. So it's not all about just that you listen to your customers and then you respond to your customers, but it's all about the good things that you maintain, that the customer satisfaction continues, and it's all about it's a serious start towards maintaining quality, is to satisfy your customers completely and to maintain the quality according to the customer defined needs. Now, organizations who take quality seriously know that much of the secret of quality stems from listening to and responding sympathetically to the needs and wants of their customers and clients. So organizations का सबसे मेजर क्या चीज़ है, वो क्या जज करते हैं कि जो क्वालिटी को बहुत सीरियसली तरीके से लेते हैं या इस कॉन्सेप्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं कि they have to maintain quality in their organization. It's much the secret of quality would be कि it's about listening and responding sympathetically to the needs and wants of their customers and clients. So उनके customer and clients की जो needs हैं या wants हैं, उसको sympathetically सुनना and then responding to that in a kind way, and then fulfilling their needs and wants. So quality involves doing many other things well also, but unless an institution puts its customers first, the preconditions for developing quality will not exist. So अगर एक इंस्टीट्यूशन अपने कस्टमर्स को पहले नहीं रखते उस जगह पे, तो फिर उनके लिए ये चीज़ बहुत हार्ड है, या इट्स वेरी डिफिकल्ट टू the preconditions for developing quality वो exist ही नहीं करेंगी ये कंपनी के अंदर. So for an organization or a company to maintain quality in their product or their services, they need to see their customer wants and then satisfy those. ठीक है, क्योंकि otherwise quality develop या exist नहीं कर पाएगी. Now why quality? हम quality की बात करते हैं, so then we have this question, why quality, why is it important? So quality is an idea whose time has come. So it is on everyone's lips. आजकल quality, हर कोई quality, हर चीज़ में, हर product में, हर service में quality demand करता है customer. So in the UK we have the Citizens Charter. It's the business excellence model and the investors in people standard.
सो अगर हम क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए देखें तो यूके में जो है उन्होंने सिटीजन्स चार्टर बनाया है, ठीक है, द बिजनेस एक्सलेंस मॉडल है, एंड द इन्वेस्टर्स इन पीपल स्टैंडर्ड, while in the United States has the Malcolm Baldrige Award, and the Japanese have the Deming Prize. So there are different ways of judging or maintaining quality, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंस्टीट्यूशन को जज करना उसके क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। सो यूके में उन्होंने अवार्ड्स रखे हैं या सर्टिफिकेशंस है, सिटीजन्स चार्टर है, फिर बिजनेस एक्सलेंस मॉडल है, फिर इन्वेस्टर्स इन पीपल स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये चीजें वो जज करते हैं क्वालिटी जज करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स में दे हैव डन द सेम थिंग, दे हैव द Malcolm Baldrige Award, in which a company goes through a very vigorous process of checking and maintaining all their concepts so that they can be considered of being given that award or not. अगर वो fulfill करते हैं सारे categories, then they are given that award. And Japanese में उसी का equivalent जो है उन्होंने वो रखा है Deming Prize. So an organization, if it's fulfilling the concepts of quality, then they are awarded with the Deming Prize. Now the European Foundation of Quality Management has developed the successful European Quality Award. फिर European Foundation of Quality Management ने एक European Quality Award successfully develop किया है, while internationally there is the important international standard ISO 9000 series. और internationally base पे अगर हम देखें क्वालिटी मेंटेन करने के लिए या जज करने के लिए जो अवार्ड्स है या सर्टिफिकेशन है, तो वो फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 9000 सीरीज ने जो है इंटरनेशनली वो बेस एक रखी है, जिसकी बेस के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी को जज किया जा सकता है। So when we speak about why quality, once again, now these are just some of the more influential quality awards and standards that have been introduced in recent years to promote quality and excellence in a wide range of industries and services. So अगर हम ये देखें तो these are just some more influential, ये सिर्फ awards हैं, quality awards ज़्यादा influential दे दिए या standards ऐसे set कर दिए गए, ठीक है, जो recent years में ज़्यादा introduce हुए हैं और ये quality को promote करने के लिए organizations में, institutions में, and the excellence in quality in a wide range of industries and services. Now this new consciousness of quality has now reached education. So अगर हम ये देखें कि ये कॉन्शियसनेस ऑफ क्वालिटी सिर्फ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या डेवलपिंग या सर्विसेज में नहीं है, बल्कि इवन अब एजुकेशन में भी क्वालिटी मेंटेन करने की वो स्टैंडर्डाइजेशंस होना शुरू हो चुके हैं. सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग रिक्वायर्ड टू डेवलप देयर ओन अप्रोचेस टू क्वालिटी, और उनको अपने अप्रोचेस डेवलप करने के लिए दे आर ऑल्सो गेटिंग ISO सर्टिफाइड ऑल्सो एंड नीड टू डेमोन्स्ट्रेट पब्लिकली दैट दे too can deliver a consistent quality service. और उनको भी अब जो है ये नीड है एजुकेशनल फील्ड्स या इंस्टीट्यूशंस को कि दे हैव टू शो ऑल्सो कि वो एक कंसिस्टेंट जो है मुसलसल क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को. Now, no longer are quality assurance, total quality and TQM new initiatives or another set of fads designed to add to the workload of already overworked teachers and underfunded institutions. So total quality management सिर्फ ये इस चीज़ के लिए नहीं है कि उनको already overworked जो teachers है या जो institutions हैं जिनको funding proper नहीं मिल रही है, उनका workload बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उनका वर्कलोड कम करने के लिए. क्योंकि इफ दे कैन मेंटेन द क्वालिटी assurance and they can go with the total quality management new initiatives, फिर they are designed to help the people improve the quality without overburdening them. Now, while initiative fatigue has been a symptom of a hard-pressed education system for the past decade, quality improvement should not be seen in this light. So, but rather as a set of tools to help teachers and educational managers. So, अगर हम ये देखें कि इनिशिएटिव हमारा फटीक जो है वो ज़्यादा के सिस्टम पे हार्ड प्रेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, जो पास्ट डिकेड से चला आ रहा है, ठीक है, अरसे से चला आ रहा है. सो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो है उस
उसकी नज़र में इट शुड नॉट बी सीन इन दिस लाइट, उसको इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि क्वालिटी के रूल्स या इस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए कि वो बर्डन बन जाए, बट रादर कि वो इट शुड बी अ सेट ऑफ टूल्स जो टीचर्स को या एजुकेशनल मैनेजर्स को हेल्प कर सके, नॉट ओवर बर्डन देम बट टू रिलीज देयर बर्डन. Now, total quality management is both a philosophy and a methodology. So, total quality management जो है वो philosophy भी है और methodology भी है. It's not only about the theories but also the methods of employing quality. Now, it can assist institutions to manage change and to set their own agendas. For dealing with the plethora of the new external pressures. So institutions में it can help them manage the change ताकि वो नए एजेंडास अपने जो है बना सके, ठीक है, and they could deal with the plethora of the external pressures also. Now, considerable claims are made for TQM. So, TQM के लिए considerable claims भी रखे गए हैं, ठीक है. These are, there are those in education who believe that total quality management properly applied to it can complete a similar transformation. So, कुछ ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन में ये बिलीव करते हैं कि अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली अप्लाई किया जाए तो वो complete transformation हो सकती है, and then organizations can maintain quality in a better way. Now, however, TQM does not and will not bring results overnight. So, ये चीज़ अगर कॉन्सेप्ट है कि आपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स एकदम इंस्टॉल कर दिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने इंस्टीट्यूशन में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एंड आप समझें कि एक मिनट में आपको ओवर द नाइट आपको रिजल्ट इसका मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट द सेम वे लाइक इन मैन्युफैक्चरिंग, यू हैव टू इनबिल्ड इट फॉर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो इसी तरीके से एजुकेशन में भी आपको ये बिल्ट इन करना है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, ताकि ये साथ साथ इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस चलता रहे. Neither it is a panacea for all the problems that beset education. So ये उसके लिए एक हल भी नहीं है कि सिर्फ हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमने रूल्स या कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड कर दिए तो सारे प्रॉब्लम्स एजुकेशन में दूर हो जाएंगे. Rather, it is an important set of tools that can be employed in the management of educational institutions. So, बजाय कि ये सिर्फ एक ओवरनाइट हम रिजल्ट्स डिमांड करें इससे, सो रादर देन दैट इट्स मोर ऑफ एन इम्पोर्टेंट सेट ऑफ टूल्स है, ठीक है, जो हम एम्प्लॉय कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मैनेजमेंट के लिए, ठीक है. मैनेजमेंट पे व्हेन द मैनेजमेंट वुड फॉलो दी सर्टन रूल्स ऑफ क्वालिटी और द TQM रूल्स एंड यूज द टूल्स फॉर इट, देन ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट से ही फर्दर ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बेहतरी होगी. Now, when I first started researching quality, I asked the question, why should an educational establishment want to be involved in quality assurance activities? तो सबसे पहले यही जब हम 4 क्वालिटी इम्पेरेटिव्स अगर हम देखते हैं, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि एक एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो क्यों क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहेगी. नाउ, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च दैट हैज लेड मी टू द कंक्लूजन दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर परस्यूइंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट फॉर अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट रीजंस. सो क्वालिटी जो है ये मेरी कंक्लूजन के हिसाब से कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो परस्यू कर रही हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को बड़ी इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से. ना, सम आर लिंक्ड विद प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिंक्ड है, while others result from the competition inherent in educational marketplaces or from the need to demonstrate accountability. So either they have to be accountable for the deeds or the things that they are providing or the system that they are providing, or they are either in competition with the other educational marketplaces who are maybe giving better quality. So educational systems में क्यों हमें ज़रूरी है quality लेके आना? Because either we are in competition or we need to be accountable for the standard or the quality that we are providing.
Now, the 4 quality imperatives. Now, I've called the results of this research the 4 quality imperatives. Now, the 4 quality imperatives would be like in the commercial world, it is the survival imperative that often drives quality improvement. But the complexity of education and the importance of values in education makes the motives for taking a quality stance more complicated and diverse. So अगर हम ये देखें कमर्शियल वर्ल्ड में तो उसका सर्वाइवल जो इम्पेरेटिव क्या है, इट विल मे बी कमर्शियल वर्ल्ड में तो आपको ड्राइव कर रहा होता है ना क्वालिटी की तरफ, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली इन कॉम्पिटिशन विद अदर कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस, एंड आपको क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए एक मोटिवेशन होती है. बट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एजुकेशन में, अब एजुकेशन की कम्प्लेक्सिटी में इट्स इम्पोर्टेंट टू द वैल्यूज ऑफ एजुकेशन जो हमें मोटिवेट करेगी मे बी टू टेक सर्टन स्टेप्स टू improve the quality stance, or that are more complicated and diverse. Now, the 4 imperatives reflect the complex environment in which educational institutions operate. So, अगर हम educational institutions के बारे में बात करते हैं तो वो 4 imperatives जो है उनको बड़े complex environment को बड़े clearly describe करता है educational institutions की operation उसको, कि they are the drivers and motivating forces that challenge any institution to make a proactive stance on quality. So, पहली क्या चीज़ है कि they are the motivators or the drivers, driving forces जो challenge कर रही है किसी भी institution को ताकि वो कोई proactive stance ले सके quality maintain करने पे. Now, the customers and clients of the education service would be the students, the parents, and the community. Now, they deserve the best possible quality of education. So this is the moral high ground in education, and one of the few areas of educational discussion where there is little dissent. So major क्या चीज़ है एजुकेशन, अगर हम फील्ड में देखें तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी आर द मेजर क्लाइंट्स जो हैं एजुकेशन फील्ड के, और दे वुड वांट टू हैव एंड दे डिजर्व आल्सो टू हैव द बेस्ट क्वालिटी इन एजुकेशन, एंड फिर हाई मोरल स्टैंडर्ड्स जो है ना ग्राउंड्स इन एजुकेशन आल्सो, और फिर कुछ एजुकेशनल डिस्कशंस वेयर देयर इज लिटिल डिसेंट आल्सो. नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल प्रोफेशनल्स and administrators to have an overriding concern to provide the very best possible educational opportunities. So, एक duty है educational professionals की या administrators की कि they should have an overriding concern to provide the best possible educational opportunities, कि वो उनको सबसे best educational opportunities provide कर सकें ताकि they can excel. Now, as John West Burnham has put it, it is difficult to conceptualize a situation where anything less than total quality is perceived as being appropriate or acceptable for the education of children. So, John West Burnham ने ये चीज़ कही कि it is difficult to conceptualize a situation. ऐसा situation को judge करना या सोचना भी कि जहाँ पे यानी टोटल क्वालिटी जो है उससे कुछ भी कम मिल रहा हो, ठीक है, या अप्रोप्रिएट या कोई भी ऐसी चीज़ एक्सेप्टेबल हो जिसमें चिल्ड्रन की एजुकेशन में थोड़ा सा भी लेस क्वालिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है. एनीथिंग दैट इज लेस देन द टोटल क्वालिटी वो बच्चों की एजुकेशन में नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट्स द बेस. व्हेन वी स्टार्ट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर आवर चिल्ड्रन, देन दे मेंटेन दैट ऑल देयर लाइव्स during all of their education, even at a higher level or college and university level. So, closely linked to the moral imperative is the professional imperative. So, professionalism implies a commitment to the needs of students and an obligation to meet their needs by employing the most appropriate pedagogic practices. So, professionalism implies a commitment,
वो कमिटमेंट इम्प्लाई कर रहा है, प्रोफेशनल अगर होंगे फॉर टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, उनके नीड्स स्टूडेंट्स के, एंड द ऑब्लिगेशंस टू मीट देयर नीड्स बाय एम्प्लॉइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट पेडागोगिक प्रैक्टिसेस, यानी ऐसे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस उनके लिए एम्प्लॉय किए जाए या ऐसे टीचर्स हाई क्वालिटी के उनके लिए रखे जाए ताकि उनके स्टूडेंट्स की प्रोफेशनल नीड्स पूरी हो सके एंड उनके साथ एक प्रॉपर दे वुड बी गेटिंग प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन. Now, educators have a professional duty to improve the quality of education, and this, of course, places a considerable burden on teachers and administrators to ensure that both classroom practice and the management of the institution are operating to the highest possible standards. So, educators का एक professional duty है, ठीक है, कि वो quality improve करें ताकि एजुकेशन में भी वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है. देन वो बर्डन्स जो है उसका ज़्यादा जो हैवी बर्डन आता है वो टीचर्स के शोल्डर्स पे, एडमिनिस्ट्रेटर्स के शोल्डर्स पे आता है टू इम्प्रूव एंड मेंटेन क्वालिटी इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बोथ क्लासरूम प्रैक्टिसेस में भी एंड मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन में भी, ठीक है. एंड ऑपरेटिंग जो है ताकि वो ऑपरेट कर सके हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड्स पे एंड दे कैन प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू अ हायर क्वालिटी. Now, competition is a reality in the world of education. So, एक reality तो है. Nowadays, there are so many schools coming into competition, universities and colleges also one after another, and they're all competing with each other for maintaining the higher quality standards. So, falling enrollments can lead to staff redundancies, and ultimately the viability of the institution can be under threat. So educationalists can meet the challenge of competition by working to improve the quality of their service and of their curriculum delivery mechanisms. So educationists जो है, they can meet the challenge of competition, ठीक है, किस तरीके से, बाय वर्किंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी, ताकि वो क्वालिटी अपने सर्विसेज की इम्प्रूव कर सके, ऑफ देयर करिकुलम और डिलीवरी मैकेनिज्म्स को इम्प्रूव कर सके. सो टीचिंग मेथोडोलॉजी आपकी इम्प्रूव हो सके. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टू सर्वाइवल इज दैट इट इज अ कस्टमर ड्रिवन प्रोसेस. सो फोकसिंग ऑन द नीड्स ऑफ क्लाइंट्स एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स to respond to their needs and wants. So सबसे major चीज TQM की क्या है कि it's the most important thing is survival of the customer driven process है, ठीक है. तो कस्टमर के नीड्स, क्लाइंट्स की नीड्स और उनको प्रोवाइड करना उस मैकेनिज्म पे उनकी वांट्स एंड नीड्स को देख के, दैट इज द मेजर फोकस ऑफ TQM. सो इम्प्लाइंग TQM रूल्स टू एजुकेशन ऑल्सो would be satisfying the customer needs. So competition requires strategies that clearly differentiate institutions from their competitors. And the competitive imperative would be that quality may sometimes be the only differentiating factor of an institution. So focusing on the needs of the customer, which is in the heart of the quality, is one of the most effective means of facing the competition and surviving in it. So that's all for today, students. We will continue with this further on in our next lecture. Thank you so much.